हेलो एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू अनअकैडमी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन and working hard to crack your gate 2021, and those who are in second year or the third year, they are looking for the like gate 2022 and मेहनत करिए, लाइफ में कुछ अच्छा ना अच्छा होने ही वाला है। So my dear friends, let's crack GATE ESE with India's largest online learning platform. So don't be late, get the subscription now and start your journey with India's largest online learning platform and with India's top educators in Unacademy. So all of you, there is a great announcement for the mechanical engineering students. गेट का नया बैच, गेट 2022 का नया बैच, दैट इज द बैच ए, is going to be launched on 28 December at 6 p.m. and these are the faculty of your gate जो कि लिजेंड है. ऑलरेडी मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस फैकल्टी, कुलकर्णी सर एंड जसप्रीत सर एंड Rajiv sir. So you know about this faculty. So the classes will be held in the English as well as in हिंदी मीडियम. तो जो भी स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं. सो अगर आपके नोन सर्कल में कोई भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप उनको ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं. सो माई सेल्फ अजय दास, आई एम एमटेक इन कंप्यूटर साइंस. आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द 8+ years and till now I have mentored almost 20,000 engineering students for the GATE. So I have worked as a freelancer in many reputed institutes of India, qualified the GATE exam 5 times, also qualified the Chhattisgarh State Electricity Board exam with the AIR 8. So dear students, download the Unacademy learning app and start your preparation with India's top educators. What you will get, this is the major question which always used to arise before taking the admission or you can say the subscriptions. So I have just written some formal things that you are going to have after taking the subscription. The first thing is the daily live classes, second one is the structured courses, third one is the live test and quizzes, and unlimited access means you can access the lectures again and again until you get the entire concept, and this is our main motto. So these are the formal things, and you might be thinking, sir, these things I'm already getting from everywhere, so what is special things about you? So the special thing is the learn with the top educators. देखिए, आपको अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंडिया का टॉप एजुकेटर्स मिलने जा रहा है, तो आपके क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. तो दोस्तों, अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो आपके रिजल्ट्स में भी डेफिनेटली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है. सो आई हैव जस्ट लिस्टेड few of the faculty members, those who are associated with the Unacademy. You can see over here from the electrical, electronics, civil, similarly from the mechanical. If you want to explore or know about more about the faculties who are associated with the Unacademy, their experience, their results, what you can do, you can download the Unacademy learning app and you can check the profile of each and every educators. And after, there is also a free special class available. तो आप उस फ्री स्पेशल क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं. टू एक्सेस द फ्री स्पेशल क्लासेस यू कैन यूज माय प्रोमो कोड, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं. यू कैन यूज माय प्रोमो कोड टू अनलॉक द lectures, and just after getting the satisfaction you can look upon the subscription procedure. Got it everyone? So my dear friends, as you know, गेट ईएससी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन किन किन ब्रांचेस के लिए अनअकैडमी आपको प्रिपेयर कराती है फॉर द गेट और ईएससी. So I have listed all those branches: mechanical, computer science, electrical, electronics, chemical, civil, and production, instrumentation, mathematics. So these are the branches for which the Unacademy offering you to prepare for the GATE as well as for the ESE. देखिए, ESE बहुत ही लिमिटेड ब्रांचेस के लिए होते हैं. If you want to know, you can visit to the website of the ESE, that is the IES, Indian Engineering Services. So आप वहां पर जाकर करके देख सकते हैं. And ESE, the full form is the Engineering Services Examination. So you can check it out कि कौन कौन सा ब्रांचेस एलिजिबल है. फॉर्मली मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है. ये 4 ब्रांच मेजरली हैं, ठीक है ना. प्रोडक्शन के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो मैकेनिकल के थ्रू ईएससी का एग्जाम देते हैं. सो these are the branches for which you can easily look upon for the like subscription of the GATE or ESE. But if you want to get the subscription, my dear friends, these are the subscription model. These are the subscription model. So already, because from the last 2 years already the plus subscription is working. From the last 2 years, plus subscription is working. This is the first subscription model, and recently the Unacademy has launched the new subscription model, that is the Iconic.
सो आइकनिक जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है जिनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, जो डायलेमा में है कि सब्सक्रिप्शन ले या ना ले। देखिए डायलेमा तभी होता है, कंफ्यूजन तभी होता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कब नहीं होता है? जब आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा वीक होते हैं। सो ये हाल जो है ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स का है। बाकी के जो 10% स्टूडेंट है वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है, उनके सब्जेक्ट का नॉलेज है तो वो आगे मूव कर जाते हैं। लेकिन जो 90% स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने लापरवाही की है बीटेक में, उस कॉन्सेप्ट की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। सो फॉर दोज काइंड ऑफ कैंडिडेट द अनअकैडमी हैज लॉन्च द न्यू सब्सक्रिप्शन मॉडल, दैट इज द आइकनिक, जहां पर यू कैन चूज योर पर्सनल कोच और you can say the personal guide or mentor who will assist you time to time according to your like performance, also who will assist you to solve your doubts, to like solve your problems. Everywhere he will assist you. So you can choose any one of the educator as your personal coach in case of iconic. Now let's see the like fee structure of the plus and iconic. So I have listed the fee structure of the plus over here. So if you are looking for the 1 month of subscription, this is the fees, this is for 3 months, this is for the 6 month, and this one is for the 12 month. So if you are in a final year or the pass out, you can go for the subscription of the 12 month. Similarly, if you are in a like second year or the third year, then you can either go for the 18 month of subscription or you can go for the 24 month of subscription. There is a very little bit fee difference, you can check it out. Okay, so if अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो आप डेफिनेटली 18 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इन ऑल द सिचुएशन इफ यू आर यूजिंग माय कोड दैट इज द आईफा व्हिच विल बी आल्सो यूज to access the free special classes, you will get the minimum 10% discount. And once you will apply this code, your final fee structure for the 12 month will become around 27,000. So my dear friend, this is the most nominal fees which any kind of student can easily afford. And there is another opportunity, आप इस फीस को EMI में भी पे कर सकते हो and there is no EMI cost. Got it? Now let's come to the Iconic. So in case of Iconic, there are only two subscription model. One is for the 12 month, second one is for the 24 month. Because जो भी स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअली वीक है, हम लोग बिलीव करते हैं कि उनको एटलीस्ट 8 से 10 महीना, कम से कम 10 से 12 महीना तो चाहिए ही चाहिए उनको अच्छे से प्रिपेयर्ड अपने आप को करने के लिए, अपने आप को एक खड़ा करने के लिए. Are you getting my point? So if you are looking for the 12 month of subscription, your fee structure will be around 50,000, and for the 24 month, it will be around 74,000. And in all the situation, once you will apply this code IFA, you will get the minimum 10% discount, and this is the fees just after the discount. This is the fees just after the discount. So what we are observing over here is, sir, there is a difference of the 40% fee between the plus and Iconic. So whenever the fees is increasing, you are getting some additional things. Yes or no? We must get some additional things. So what are the additional things that you are going to have in a Iconic in comparison to the plus? Let's try to see. So dear students, if you are looking for the plus subscription, then these are the things which you will get in the plus. The first one is the India's best educator that you will get everywhere. Interactive live session, structured courses and PDF, live test and quizzes. So these are the things which you are getting in the plus subscription. But what about the Iconic, in which you are paying almost 40% more fees in comparison to the plus? So all the things that you are getting in the plus, definitely you will get in the Iconic. But these are the additional things that you will get in case of Iconic. The first thing is personal coach. Suppose there are 20 number of educators in the computer science. You can choose any one as your personal coach, okay, who will assist you to solve your doubts, who will keep you motivated, who will assist you to solve your problems, and every time he will just in touch with you until your GATE exam. जब तक आपका GATE का एग्जाम नहीं होता है तब तक वो एडुकेटर आपके साथ टच में रहेगा और आपको हर जगह हर तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो आपको हेल्प करेगा. Is that clear? So this is the first and the most advantageous things that you are getting in the Iconic. देखिए जनरली हमारे लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई भी एडुकेटर्स है जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, खुल करके बात कर सकता हूँ, मौका नहीं मिल पाता है. अगर गलती से एक दो बार मिल गया तो एक ही दो बार मिल पाता है. लेकिन यहाँ पर आप उस एडुकेटर से अनलिमिटेड बार उस पूरे प्रिपरेशन के दौरान जहां पर आपको जरूरत लग रही है आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो. The second most advantageous things is the preparatory study material. So
जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइफ में हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है, खास करके जब हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहां पर स्टडी मटेरियल का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है, एंड लाइव क्लासेस का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि देखिए अगर आप लाइव क्लासेस नहीं करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे यू कैन नॉट अपियर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। सो कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स, जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे एफर्ट डालते हो देन you can assure that you can make minimum 60% score, you can make minimum 60% score। तो देखिए अच्छा स्कोर करने के लिए आपको हर तरफ से स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। यू हैव टू रेगुलरली अपियर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड यू हैव टू रेगुलरली अटेंड ईच एंड एवरी क्लासेस। ओके, सो स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिल रहा है बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर। द नेक्स्ट थिंग इज द पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, मींस योर टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड पर्सनली एंड you will be intimated, and also you will be guided where you need some improvement and where you have to focus more। किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, किस टॉपिक पे करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, everything you will be guided in a plan manner, means you will be guided for the study planner। Okay, so these are the additional things that you are getting in case of Iconic just after paying 40% more fees। So at the end moment I would like to say either you are taking the subscription in the plus or the Iconic, never forget to use the code IFA, never forget to use the code IFA। So once you will apply this code you will get minimum 10% discount। And before leaving this session, okay, introductory session, I would like to tell you one more thing। Many students have a confusion that this particular promo code which I have written over here IFA is only applicable for the GATE and ESE। No my dear friends, Unacademy prepared for almost more than 35 kind of competitive exam like the CAT, JRE, UPSC, IIT, JEE, banking, SSC, JEE। So anywhere you can apply this particular code, so you can suggest your friends, your colleagues, or like your relatives to apply this particular code, and all of them will get the minimum 10% discount। Is that clear? So now let's start the subject। So this is the slogan of the Unacademy, let's crack it, because we believe we will prepare you in such a way that you would be able to crack your exam in a first attempt। So as this is the complete series of the theory of computation, so today I'm going to cover the part 3। Till now we have seen what is the DFA, what is the NFA, how to convert the NFA into a DFA, and also we have seen some of the standard numerical related with the GATE exam। तो अभी तक हम लोगों ने जो NFA को DFA में कन्वर्ट किया था वो विदाउट एप्सिलॉन मूव था, बट टुडे आई विल कवर दैट हाउ टू कन्वर्ट अ NFA विद एप्सिलॉन मूव इनटू अ DFA। Is that clear? And then we will try to solve some of the related numericals and then we will move to the minimization of the DFA। तो आज हम लोग मिनिमाइजेशन भी कवर अप करेंगे, लेकिन कुछ एक टॉपिक है जो लास्ट लेक्चर में हम लोग को अटेंड करना था, हम लोग कर नहीं पाए, आज उसको पहले कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मिनिमाइजेशन टेक्निक। ओके, सो जस्ट सी ओवर हियर, just see over here। Okay, see NFA, what kind of NFA with epsilon, NFA to DFA conversion। So in the last lecture I have already told you, if a machine containing a epsilon moves then it will be a NFA। So today we will see how to convert the NFA where epsilon moves exist to the DFA। As we know the NFA is not applicable for any real life application, this is not useful for any real life application, so we must need to convert the NFA into a DFA। So let's see, I'm assuming a simple NFA, this is the 0 and we are considering the epsilon moves and we are migrating to the new state, this is the final state and this is the
Okay, looking upon this machine, this is the machine M, which is NFA in nature. Why it is NFA? Because from A to B we do not require any input symbol. By taking the epsilon we can move from A to B. Means this particular machine is accepting the epsilon also. Yes or no? This machine is accepting the epsilon also. It can accept any counting of 0 followed by any counting of 1. It can accept any counting of 0, that is the any counting of 0, 0 to the power n dot. By taking the epsilon you are migrating to the state B, and then dot 1 to the power any counting of this. So the language generated by this particular machine will be like this. How you can write this? You can write this in this manner: 0 to the power n, 1 to the power m, where nm is greater than equal to 0. So this is the language generated by this particular machine. Now we want to convert this NFA into a DFA. How to convert this? How to convert this? So just see over here. What I have told you yesterday, that consider the initial state of the NFA. तो देखिए इनिशियल स्टेट में आप क्या लोगे? इनिशियल स्टेट में ए तो होगा ही, ए से बी पे माइग्रेट करने के लिए कोई इनपुट सिंबल नहीं चाहिए. टेकिंग द एप्सिलॉन यू कैन मूव फ्रॉम ए टू बी. सो इन द इनिशियल स्टेट यू कैन कंसीडर ए कॉमा बी. इन द इनिशियल स्टेट यू कैन कंसीडर ए कॉमा बी, क्योंकि ये दोनों स्टेट अलग नहीं है, इन दोनों को हम लोग मर्ज कर देंगे. क्योंकि ए से बी में ट्रांजिशन के लिए यू डू नॉट रिक्वायर्ड एनी इनपुट सिंबल. यहां पर इनपुट सिंबल क्या है? The set of input symbol is 0, 1. So without taking any input symbol, we can migrate from A to B, and that's why we are merging A and B to the initial state. Now take the transition. Take the transition. See, A पे अगर हम लोग 0 देते हैं, where we are migrating, we can migrate to A as well as B. Are you getting my point or not? If you are taking the input symbol 0 on state A, we can migrate to A as well as B. Just see over here. अगर A पे हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं, सो वी कैन माइग्रेट टू वेयर? वी कैन माइग्रेट टू A. सी दूसरा सिचुएशन क्या है? A पे हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं. जस्ट कंज्यूम द 0. वंस यू विल कंज्यूम द 0, ट्रांजिशन फंक्शन विल लुक लाइक दिस, एंड दिस वन इज नथिंग बट A. So finally, giving the input symbol 0 on state A, we will have two different kind of migration. Already you know about this, that A dot epsilon is equal to A. So once we will consume the 0, it is nothing but it will remain the epsilon. Yes or no? And also you know epsilon dot epsilon is equal to epsilon. So these are the two important things that we have to remember, and this is a very logical thing. इसको याद करने की जरूरत नहीं है. So finally, if we are giving the input symbol 0 on this particular state, we can migrate to A as well as B. Similarly, B state पे अगर 0 देते हैं तो कोई migration नहीं है. If we are supplying input symbol 0 on state B, there is a empty set. So ultimately, AB पे अगर 0 supply करेंगे तो we can migrate to the AB. That means there is a self loop. Similarly, supply the 1. ए पे अगर हम लोग 1 सप्लाई करते हैं तो समझ रहा बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा इजी वे में जाके समझो. सी इफ यू आर सप्लाइंग इनपुट सिंबल ए 1 ऑन ए, सो हाउ वी कैन राइट इट? कैन वी राइट इट इन दिस मैनर? ए, this is the 1. Before 1, if there is nothing, we can imagine the epsilon. Yes or no? So on state A, consuming the epsilon, well, we will migrate to the state B, and there is a 1. So ultimately it is giving you a B. So giving an input symbol 1 on state A, we are migrating to B. Got it? We are migrating to B. Similarly, giving an input symbol 1 on state B, we are migrating to only B. So ultimately दोनों ही केस में 1 input supply करने पे हम लोग कहाँ migrate कर रहे हैं? We are migrating to new state, that name is B.
So in the first state, we have checked the transition over the input symbol 0 and 1. Similarly, we will try to check the same thing over here. See, B में अगर हम लोग 0 supply करते हैं तो that is the phi, or you can say empty set. So यहाँ पर ये क्या होगा, 0 supply करने पे we are moving to the steady state that you can represent the phi, and here you can put any 0 and 1. 1 अगर input supply करते हैं तो we can migrate to the, so there will be a self flow. Since B is the final state in NFA, so we will make all the state as a final where B will appear. So this is the final DFA. अब इस DFA में भी देखो initial state final है, epsilon accept होगा, any counting of 0 followed by any counting of 1. इसके बाद अगर आप 0 लेते हो तो reject हो जाएगा. तो ultimately ये भी DFA क्या कर रहा है? This DFA is accepting the same language. Got it, everyone? Now you people are able to understand how to convert the NFA into a DFA. So let's see some of the numerical. So before looking upon some of the numerical, let's try to understand something. See, complement of DFA. Complement of देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए और द लैंग्वेजेस, इसका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना. सपोज इफ आई एम मेकिंग अ मशीन डीएफए, सी ओवर हियर, इफ आई एम मेकिंग अ मशीन एम that is DFA in nature, then how to define a machine M? If we are supplying a string W, then W will be accepted when if W belongs to L, and it will be rejected if W does not belongs to L. तो अगर कोई भी स्ट्रिंग लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कोई भी मशीन एक लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग बनता है, तो कोई भी स्ट्रिंग अगर लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी एक्सेप्टेड, और अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो इट शुड बी रिजेक्टेड. दिस इज द नेचर ऑफ डीएफए. But whenever I am constructing another machine which is the complement of above, I am constructing the above machine, another machine which is the complement of above, means we are doing the complement of the languages. We are doing the complement of the languages, and if we are supplying any string W, the same string, if we are trying to supply the same string W over here, what will happen? So जिस situation में ये string accept हुआ था, ये क्या होगा, रिजेक्ट होगा. सो इट विल बी रिजेक्टेड इफ W belongs to L. Are you getting my point? And it will be accepted if W does not belongs to L. सो अगर कोई भी स्ट्रिंग लैंग्वेज, एक्चुअल लैंग्वेज एल पे, दिस इज द एक्चुअल लैंग्वेज एल, इस पे बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली इसके कॉम्प्लीमेंट वाले से रिजेक्ट होना चाहिए, और अगर इस पे बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो डेफिनेटली इससे एक्सेप्ट होना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना, जस्ट उसका उल्टा कर देना. कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो पहले हो रहा था उसका जस्ट उल्टा. Is that clear? Now let's see how to construct the complement of a DFA. This is a very simple thing, how to construct a complement of a DFA. See, I'm just considering a language. See, L is equal to W belongs to AB whole star, where number of A in W mod 3 is equal to 0. See, I hope you people know about the mod operation. See, whenever we are doing the mod operation over the integer x, so mod operation will always give you the remainder value. So the remainder value could be a 0, 1 or 2. The remainder value could be a 0, 1 or 2.
So what it is saying, if the mod value is 0, then this language will belongs to this language, that string will belongs to this language. मीन्स काउंटिंग ऑफ ए अगर 3 से डिविजिबल है तो ही वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में बिलोंग करेगा. तो अगर कहीं पर भी रिमाइंडर वैल्यू 0 आ रहा है मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड इन दैट सिचुएशन इट विल बिकम अ फाइनल स्टेट क्योंकि वो एक्सेप्ट होना चाहिए मशीन से. एंड द रिमेनिंग इन द रिमेनिंग 2 इट विल बिकम अ नॉन फाइनल स्टेट. मीन्स अगर रिमाइंडर वैल्यू 0 आ रहा है किसी भी स्ट्रिंग्स के करस्पॉन्डिंग, s इज द काउंटिंग ऑफ a inside the string. Okay, so if you are getting a remainder value 0, then it should become a final state, and if the remainder value is 1 or 2, it should become a non final state. Got it? So how to construct a DFA? We are trying to construct a DFA for the above language. We are trying to construct a DFA for the above language. See how. तो देखिए 3 रिमाइंडर पॉसिबल है. सो सपोज दिस इज द रिमाइंडर R0, दिस इज द रिमाइंडर R1 एंड दिस इज द रिमाइंडर R2, एंड द रेस्ट्रिक्शन इज गिवन ओवर द काउंटिंग ऑफ A. मींस अगर A का काउंटिंग 3 से डिविजिबल होता है तो चूंकि रिमाइंडर स्टेट R0 को हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल स्टेट बनाएंगे, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग द रिमाइंडर वैल्यू 0 इट शुड बी अ फाइनल स्टेट. So I am making this as a final state and remaining 2 will remains a non-final state. Remaining 2 will remains a non-final state. Now see over here. अगर हम लोग सिंगल A सप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल A का मतलब क्या हो गया, 1 mod 3 इक्वल टू कितना होता है 1. So the remainder value will be 1. It should be rejected. Single A should be rejected. Similarly double A should be rejected. But if you are considering the triple A, it should be accepted. So हर एक 3 के मल्टीपल का जो स्ट्रिंग है वो हमारा क्या होगा, इस मशीन से एक्सेप्ट होगा. Every string in a multiple of 3 will be accepted by this particular machine, and in the midway the B can come anywhere. The B can come anywhere. So just see over here. Suppose I am supplying a string A B B A A. So what is the counting of A over here? 1 2 3. Since the counting of A in W, this is the string W, is divisible by 3, it should be accepted. So just see over here, A B B A A. So after the complete scanning of this input, we are reaching to the where, final state. So this one will be accepted. This one will be accepted, and any other string which is not in which the number of A is not divisible by 3, it will be rejected. So this is the simple machine for this particular language. Now we need to construct the complement of this machine. See, अगर above language का हम लोग complement लेंगे तो ये language कैसा होगा, ठीक है ना, set of all strings over AB in which number of A's is not divisible by 3. Not divisible by 3. Yes or no? अगर ये 3 से डिविजिबल है यहां पर काउंटिंग ऑफ ए तो यहां पर क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा. सो दिस इज द सेंटेंशियल फॉर्म टू रिप्रेजेंट द लैंग्वेज. दिस इज द सेंटेंशियल फॉर्म टू रिप्रेजेंट द लैंग्वेज. And what will be the mathematical form, or how you can write? You can write the same thing in this manner. W belongs to AB whole star, where number of A in W mod 3 is equal to 1 or 2.
भाई तीन ही रिमाइंडर वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज द 0 1 और 2. सो इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, it is not divisible by 3, then what will be the possible remainder value? It will be a either 1 or it will be a either 2. Got it? So we can write in this particular manner. We can write in this particular manner. So what we are observing from here? So अगर यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? What basically we are observing, if we are dividing the x, which is nothing but the counting of a, by 3, since we are having a 3 remainder value 0 1 and 2, and what the remainder value we are getting 1 and 2. So these states will become the final and this one will become the non-final. So ultimately what we need to do, make all the final in actual DFA, make all the final state as a non-final and all the non-final state as a final to create the complement of a DFA. So please note it down. Please note it. To get complement of DFA, we make all final state as a non-final and all non-final state as a final. So how you will create? There are three remainder state, that is the R0, R1 and R2. एक्चुअल DFA में ये दोनों नॉन फाइनल था, तो अब इन दोनों को हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनल बनाएंगे. इन दोनों को क्या बनाएंगे? We will make it as a final state and the final state will become the non-final state. और ये हमारा initial state था. So now single A will be accepted, double A will be accepted, but if the counting of A is divisible by 3, then it will never be accepted. And on the input symbol B, there will be a self. There will be a self. So this is the machine M bar which is created for the language L. Okay, so ultimately this is becoming a complement machine. But my dear friends, there is an important point. देखिए हम लोग important point जो कि बहुत जरूरी है जानना. We can take the complement of the DFA, but we cannot take the complement of NFA. Why? See, we cannot take complement of NFA machine. The question is why? We cannot take the complement of an NFA machine. The question is why? So let's try to realize this. क्योंकि NFA मशीन का जब तक आप नेचर नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं ले सकते. See over here. What is the nature of NFA? What is the nature of NFA? So just see over here. Suppose this is the machine M which is NFA in nature, और ये भी मशीन किसी ना किसी लैंग्वेज L के लिए बना होगा. और इस मशीन में if we are supplying a string W, then there are various possibility. In the first computation it will be rejected, and in the second computation again it will be rejected, and in the third computation we will be able to realize it will be accepted. So all these things we are assuming for the same string, for the
same string. I will explain you with the help of example. Just don't worry, just be with me. Okay, so इस स्ट्रिंग को हम लोग एक NFA मशीन में सप्लाई कर रहे हैं. इन द फर्स्ट कंप्यूटेशन it is rejecting. In the second computation, the same string is also rejecting. In the third computation, we are able to realize this is accepted. So my dear friends, whenever you will take the complement of this, whenever, और complement का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है कि भाई जो इससे एक्सेप्ट हो रहा है वो इसके कॉम्प्लीमेंट से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. सो व्हाट विल हैपन इफ यू विल ट्राई टू क्रिएट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अबव मशीन. जिस पार्ट पे ये रिजेक्ट हुआ था उस पार्ट पे क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. इफ यू आर क्रिएटिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अबव मशीन, दैट इज द एल बार, देन व्हाट विल हैपन, आई एम जस्ट कंसीडरिंग, सी दिस पार्ट इज हिडन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द मशीन. Okay, I'm not talking about the language क्योंकि machine तो language के corresponding बनता है. If we are creating a machine m bar, so what will happen in the first computation, जिस computation में ये reject हुआ था उस computation में ये क्या हो जाएगा, accept हो जाएगा. Again second computation में जहां पर ये reject हुआ था फिर से क्या होगा, accept होगा. और यहां पर third computation में जहां पर ये accept हुआ था वहां से ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. गॉट इट. सो अल्टीमेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट. इफ it please try to understand, if w belongs to m, then w does not belongs to m bar. What does it mean? अगर कोई भी स्ट्रिंग w मशीन m से एक्सेप्ट हो रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट वाले मशीन से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग w जो है यहां से भी एक्सेप्ट हो रहा है और इसके कॉम्प्लीमेंट वाले मशीन से भी क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है. सो दिस इज बेसिकली वायोलेटिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज वायोलेटिंग the definition of complement. Are you getting my point, all of you? This is simply violating the definition of complement. Now let's try to understand the same thing with the help of example. Visualize करना भी जरूरी है. I'm just creating a NFA machine जो हम लोगों ने कल के न्यूमेरिकल में देखा था, ठीक है ना, वही मशीन मैं डिजाइन कर रहा हूँ. just see over here, this is the state A, this one is the 0 1, again this one is 0, this one is B, this one is C, and this one is the final state. So of course अगर W is equal to हम लोग लेते हैं 1 1 0 0, so ultimately ये स्ट्रिंग तो यहां से एक्सेप्ट ही हो रहा है ना. दिस इज द NFA. okay, just see over here, this is not a m bar, this is the NFA machine m. Okay, so if you are supplying these particular strings, so you can check it out, it will be accepted. After some computation it will be accepted. But whenever I am taking the complement of this, how to take the complement of any machine, make all final as a non-final and the non-final as a final. So this is the basic process. So ये non-final था, इसको मैंने final बना दिया. This one is the 0 1. Again this one will become 0. ये भी हमारा final हो जाएगा और इसको हमने क्या बना दिया, 0. See over here, अगर इस स्ट्रिंग को यहां पर पास करते हैं तो 1 1 0 0. So after the complete scanning you are moving to the state C, so it will be accepted. Again 1 1 0 0, so here also the string W is equal to 1 1 0 0 will be accepted, because after the complete scanning you are moving to the state A, which is actually violating the definition of the complement. क्योंकि complement का मतलब क्या होता है, this is the m bar machine. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग यहां से एक्सेप्ट हो रहा है, एक्चुअल मशीन से एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट वाले मशीन से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. दिस इज द डेफिनेशन. बट यहां पर तो
एक्चुअल मशीन से भी एक्सेप्ट हो रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट वाले मशीन से भी एक्सेप्ट हो रहा है. सो दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट पार्ट. And that's why I'm saying we cannot take, that's why I'm saying we cannot take the complement of a NFA machine. Got it? So if you know this concept, then you can easily solve the problem related with the GATE 2012. GATE 2012. So just try to realize this particular problem. So just see over here. What the question is saying, please try to read very properly. क्वेश्चन को रीड करना बहुत ही जरूरी है अच्छे तरीके से. What is the complement of the language accepted by the NFA shown below? Again read. What is the complement of the languages? What is the complement of the language? They are asking the complement of the language, not asking the complement of the machine. Got it? Everyone. क्योंकि मशीन एनएफए मशीन का कॉम्प्लीमेंट हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेना पॉसिबल है. लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेना पॉसिबल है. लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? सी, इफ W belongs to L, then W should not belongs to L bar. This is the meaning of complement of the language. Are you getting my point? All of you. अगर कोई भी स्ट्रिंग L पे बिलोंग कर रहा है तो इसको कॉम्प्लीमेंट वाले पे ये सेम स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करना चाहिए. This is the meaning of complement. So they are asking about the complement of the languages, not asking about the complement of the NFA. So this is basically possible. So they are asking about the complement of the language accepted by the NFA shown below. Assume sigma is equal to A and epsilon is the empty string. So just see, इस मशीन से किस तरह का स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है. सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, एप्सिलॉन को लेकर के फिर से यहां पर आ गए. डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, फिर से यहां पर आ गए. ट्रिपल ए मीन्स इस मशीन से किस किस तरह का स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है. ए स्क्वायर, ए टू द पावर 3 एंड डॉट डॉट डॉट. सो अल्टीमेटली यू कैन राइट ए टू द पावर n where n is greater than equal to. So this is the language accepted by this particular machine, this particular NFA machine. So once you will take the complement of this, only one string is missing, that is the epsilon. Only one string is missing, that is the epsilon. Got it everyone? क्योंकि आप देखो ना, इस मशीन, इस लैंग्वेज के लिए अगर आप मशीन बनाओगे तो मशीन कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा. समझना बात को. A, this one is the final state and this one is the, I'm just creating a machine DFA, ठीक है ना, for the language L. तो इस DFA का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा? जो फाइनल नॉन फाइनल है उसको फाइनल बनाना पड़ेगा और जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल बनाना पड़ेगा. यस और नो? जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल बनाना पड़ेगा. तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट मशीन, मीन दिस विल एक्सेप्ट द L bar and this is accepting the L. Got it? और इस मशीन को आप ध्यान से देखो तो यहां पर एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ए, डबल ए, ट्रिपल ए कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा. तो दिस मशीन इज एक्सेप्टिंग only epsilon, only epsilon. So the right answer of this question will be B. Clear? Now let's come to the one more interesting problem. One more interesting problem. Okay, just see. This is the question of GATE 2010 of 2 marks. See over here what the question is asking. Let W be any strings of length n. The length is given, means according to the question mod of W is equal to n. That is the cardinality you can say, or the length of the W is equal to n in 0, 1 whole star. Whatever the string W you are considering, it should belongs to the 0, 1 whole star, okay, of the length n. Let L be the set of all substrings of W. And what we are saying, L is equal to set of all substring of
Okay, I will take the example. What is the minimum number of states in a non-deterministic finite automaton? Non-deterministic finite automaton means NFA. What is the minimum number of states in a NFA that accept L? Take example. Suppose I am considering W is equal to 1, 0. So 1, 0 means what is the value of N over here? This is the 2. So what the L will become? The L will become all the substring of this. So इसका सबस्ट्रिंग क्या क्या हो सकता है? एक तो एप्सिलॉन हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है, तीसरा 0 हो सकता है और चौथा 1, 0 हो सकता है. Yes or no? The first substring you can assume the epsilon, second one is the 1, third one is the 0, fourth one is the 1, 0. So these are the substrings of this particular string W. Okay. Now for this language you have to design a NFA. एक ऐसा NFA बनाना है जो कि इन सारे strings को क्या करे? Accept करे. So what will be the number of states in that NFA? So just try to realize the same thing. Epsilon generate हो रहा है तो initial state will be a final state. 1 accept हो रहा है तो 1 पे ये क्या होगा? Final state होगा. 0 एक्सेप्ट हो रहा है मीन्स 0 यहां से जनरेट हो रहा है तो 0 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर ये लेना पड़ेगा. अगेन देखिए, अब यहां पर अगर आप 0 लेते हो, समझना बात को, यहां पर अगर आप 0 लेते हो तो प्रॉब्लम क्या जनरेट होगा कि 0 के बाद ये वाला पार्ट भी एक्सेप्ट हो जाएगा. 0 के बाद ये वाला पार्ट भी एक्सेप्ट हो जाएगा. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन नॉट टेक द 0 ओवर हियर, यू कैन नॉट टेक द 0 ओवर हियर. समझना, अभी आपको समझ में आएगा. तो देखिए 1 एक्सेप्ट हो रहा है और यहां से 0 एक्सेप्ट हो रहा है तो मैंने 0 को भी एक्सेप्ट करा दिया. देखिए अभी तक क्या क्या एक्सेप्ट हो रहा है. Since initial state is the final state, epsilon will be accepted. Again here 1 will be accepted and here 1, 0 will be accepted. Only one string has been left, that is the 0. इसको एक्सेप्ट कराना है. अब यहां पर अगर आप 0 देते हो, यहां पर अगर आप 0 देते हो तो डबल 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा. And double 0 does not belongs to the language L. So you cannot make the 0 over here. You cannot make the 0 over here. So how to accept the 0? To accept the 0, you have to take a migration directly from here to here by the epsilon. So whenever you are implementing the epsilon moves, it will become an NFA. See, epsilon 0 will be accepted. Here, epsilon not 0 will be accepted and this is nothing but 0. Already I have told you, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एप्सिलॉन का किसी भी इनपुट सिंबल के साथ अगर कॉन्कैटिनेशन करेंगे दैट इनपुट सिंबल विल बी generated. And in this language the set of input symbol is given as 0 comma. So how many states are there? There are 3 number of states. So whenever you are considering n is equal to 2, you are getting 3 number of states. So if you will take n is equal to 3, 4 number of states will be there. If you will take n is equal to 4, 5 number of states will be there. If you will take the n, there will be a n plus 1 number of states. Clear everyone? So this is the very simple and the genuine question that you have to think about. Fine. Now let's come to the another topic, that is the minimization of DFA. I have already considered 2 different problems related with the minimization. So first of all, we will learn about the minimization technique. Minimization of DFA. Minimization of DFA. See, what is the meaning of minimization? देखिए किसी भी लैंग्वेजेस के लिए जब हम लोग मशीन डिजाइन करते हैं तो बहुत तरह का मशीन पॉसिबल है. सपोज किसी एक बंदे ने एक मशीन बनाया जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स, मशीन M1 बनाया जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 7. देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ द सेकंड पर्सन इज मेकिंग द सेम मशीन,
it would be able to design in the 6th number of states, and there is a possibility if the third person is making the machine, it can arrange with the 5 number of states. So अलग अलग person का number of states for the same languages could be different, and all the machine will accept the same language L. All the machine will accept the same language L means एक ही language के लिए अलग अलग तरीके के machine possible है, but out of this which one is minimum we don't know. So अब हम लोग को क्या करना है, we need to apply a minimization technique such that we can get the minimum number of states. So after applying minimization technique, on all above machines, that is the M1, M2, M3, we will get unique result. Suppose we are creating a machine M. Suppose we are creating a machine M which is the minimized DFA with 4 number of states. So here ये जो 765 है, these are the number of states. So हमने यहाँ पर minimization technique apply किया and how many states are there? There are 4. So इधर आप इस पे भी minimization आपने लगाया, 4 आ रहा है, इस पे भी 4 आ रहा है, इस पे भी 4 आ रहा है. Means this is the minimum number of states that we are achieving after applying the minimization. So the question is how to apply the minimization technique. Let's discuss the minimization technique. Just see over here. Minimization of DFA. देखिए बहुत ही आपको यूनिक और शानदार टेक्निक मैं बताऊंगा, ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा. Suppose this is a DFA 0, this one is the B, this one is the B 1, this one is the C, again 0, this one is suppose E, and again 0, this one is F, और यहाँ पर 1 पे हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, we are moving to the 1, we are moving to the D, and again this is the 0 comma, so this one is also 0 comma 1, this one is also 0 comma. Clear everyone? So this is the DFA. This is the DFA with number of states is equal to how much? 6. ये एक ऐसा DFA है जहां पर number of states कितने हैं? 6 है. Okay. Now we need to apply a minimization on this DFA. So let's see how to apply the minimization. So देखिए मैं जो भी बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना. अगर बीच में आपका कोई मिस होता है तो आप इसको रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, क्योंकि ये
यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, तो आप इसको एक दो बार तीन बार देख सकते हैं ताकि आपको हर एक स्टेप्स पता रहे, ठीक है ना। सो मिनिमाइजेशन के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ टू ग्रुप ऑफ फाइनल स्टेट्स एंड द ग्रुप ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स. So I'm creating a two group. I'm creating a two group set of non-final states and the set of final states. So this is the A, B, C, D, and the next one will become E, F. So we have created two different groups. One group is set of non-final, and the second group is set of final. Transitions के लिए input symbol क्या है, one is the 0 and second one is the 1. So here the set of input symbol in the above machine is 0, 1. Fine. Now अब क्या करना है कि अगर ग्रुप क्रिएट हो रहा है तो हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है. So you can make any one of the state as a leader. So suppose we have made first element as a leader in this group and the first element of this as a leader in this group. लीडर का मतलब क्या होता है कि इस ग्रुप का कोई भी इश्यूज होगा वो हमेशा उसके लीडर से ही रिप्रेजेंट होगा. जैसे बोला जाता है ना कि अगर बच्चे कुछ गलतियां करें तो पेरेंट्स की गलती होती है क्योंकि पेरेंट्स ने उसको अच्छा शिक्षा नहीं दिया है. तो इस ग्रुप का कोई भी रिलेटेड क्वेरीज या इश्यूज होगा वो हमेशा इसके लीडर से ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना. और इस ग्रुप का कोई भी क्वेरीज होगा ये इसके लीडर से ही रिप्रेजेंट होगा. So let's try to understand why I am saying this. See over here. स्टेट ए पे अगर हम लोग 0 इनपुट देते हैं, वेयर वी आर माइग्रेटिंग टू बी, और बी जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है उसका लीडर कौन है, ए है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए. मींस एवरी ट्रांजिशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. Every transition will be represented by the leader of that particular group. तो स्टेट ए पे अगर मैंने 0 इनपुट सप्लाई किया तो वी आर माइग्रेटिंग टू बी, एंड बी जिस ग्रुप में है उसका लीडर ए है तो ये ए से रिप्रेजेंट होगा. सिमिलरली ए पे अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो वी आर माइग्रेटिंग टू सी, एंड सी जिस ग्रुप पे है उसका लीडर कौन है, ए, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए. सिमिलरली बी पे अगर 0 इनपुट दे रहे हैं वी आर माइग्रेटिंग टू ई, ई जिस ग्रुप पे है उसका लीडर कौन है, E itself. B पे 1 इनपुट देंगे वी आर माइग्रेटिंग टू डी, डी जिस ग्रुप में है उसका लीडर कौन है, E. सिमिलरली C पे 0 देंगे वी आर माइग्रेटिंग टू F, F का लीडर कौन है, E. सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय E. C पे 1 देंगे D, D का लीडर A है, D पे 0 1 कुछ भी देंगे इट विल बिकम A. सिमिलरली E पे 0 1 कुछ भी देंगे E पे माइग्रेशन हो रहा है, F पे 0 1 कुछ भी देंगे F पे माइग्रेशन हो रहा है, और F का लीडर कौन है, E है. So after filling this table we need to identify similar kind of transaction. So यहां पर देखिए इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है, और यहां पर देखिए इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है, और इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है. तो जनरली होता क्या है, इसको अगर मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करूं तो देखिए एक ग्रुप होता है, जैसे आप लोगों का 6 दोस्तों का एक ग्रुप है, उसमें से क्या हुआ 2 दोस्त का मेंटेलिटी मैच कर रहा है, बाकी के 4 दोस्तों का भी मेंटेलिटी मैच कर रहा है, तो क्या होता है, डिस्प्यूट होता है. भाई अगर मेंटेलिटी सभी, आप ग्रुप कैसे क्रिएट करते हो, इफ योर मेंटेलिटी योर थॉट्स आर मैचिंग, सो इफ देयर विल बी अ सिचुएशन 2 candidate in the same group having a same thought and the remaining 4 candidate having a different thought, so what will happen, the partition will occur, ग्रुप क्या होगा, फिर से फर्दर डिवाइड हो जाएगा. तो यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है. देखिए 0 पे यहां पर E है, 1 पे A है, 0 पे E है, 1 पे A है, तो इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पार्टीशन होगा. क्या होगा, पार्टीशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट्स. ओके, सो पार्टीशन जब होगा तो अब सिमिलर टाइप का जिसका भी ट्रांजिशन है वो एक ग्रुप में आना चाहेगा.
सो दिस वन इज द 0 and 1. सिमिलर टाइप का ट्रांजिशन किसका है? बी एंड सी का, और दूसरा है ए एंड डी का. तो ए एंड डी विल कम टू द सेम ग्रुप. नेक्स्ट बी एंड सी विल कम टू द सेम ग्रुप, और ईएफ का भी सेम ट्रांजिशन है, तो ईएफ में कोई पार्टीशन नहीं होगा. अब तीन अलग अलग ग्रुप बन गए, तो इस ग्रुप का लीडर कौन है? ए. इस ग्रुप का लीडर कौन होगा? बी. इस ग्रुप का लीडर कौन होगा? सी. नाउ एनी ट्रांजिशन ऑफ दैट ग्रुप विल बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर लीडर एलिमेंट. सो सी, ए पे 0 सप्लाई कर रहे हैं, वी आर मूविंग टू बी. बी का लीडर कौन है? तो बी इटसेल्फ है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी. ए पे 1 देंगे, वी आर माइग्रेटिंग टू सी एंड द लीडर ऑफ सी इज बी. ए पे 1 लाइक डी पे सोचिए, डी पे 0 देंगे, वी आर माइग्रेटिंग टू डी and the leader of D is A, so it will be represented by A and A. B पे 0 दे रहे हैं, we are migrating to E and the leader element of E is E. B पे 1 देंगे, we are migrating to D, leader element of D is A. Similarly it will become EA and this one will become EE क्योंकि E ही हमारा leader element है. E and so again see over here, इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है, नो पार्टीशन. इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है, नो पार्टीशन. बट यहां पर इस ग्रुप में 0 और 1 इनपुट पे इन दोनों का ट्रांजिशन क्या है? डिफरेंट है. सो ऑफ कोर्स द पार्टीशन विल हियर अगेन पार्टीशन. तो यहां पर अगर हम लोग पार्टीशन करते हैं तो क्या बनेगा? सी हो गई है. सी, this one is the 0 and so अब अलग अलग पार्टीशन हो गया. A D, second one is the B C, third one is the E and F. So now just see over here, अब पार्टीशन हुआ तो लीडर भी चेंज होगा. अब सपोज एक ग्रुप है जिसमें आप अकेला हो, तो आप खुद ही लीडर हो, अपने मन के सुनोगे, किसी का सजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इन दिस ग्रुप A will become leader, here D will become leader, here B will become leader, and here E will become leader. Now let's try to check the transition. See, A पे 0 input दे रहे हैं, we are migrating to B and B is the leader of that group, and A पे 1 दे रहे हैं, we are migrating to C, और C का लीडर कौन है? B, so it will be represented by B. Similarly अगर हम लोग D पे 0 या 1 कुछ भी देंगे, we are migrating to D, और D अब खुद ही लीडर है, it will be represented by D and D. Similarly, B पे अगर हम लोग 0 input दे रहे हैं, we are migrating to E and the leader element of E is E itself. B पे 1 देंगे, we are migrating to D and the leader of D is D itself. Similarly, C पे 0 input दे रहे हैं, we are migrating to F and the leader of F is E. C पे 1 input दे रहे हैं, we are migrating to D and the leader of D is D itself. सिमिलरली E पे 0 1 कुछ भी देंगे, E पे माइग्रेशन हो रहा है. F पे 0 1 कुछ भी देंगे, F पे माइग्रेशन हो रहा है, और F का लीडर कौन है? E है. नाउ चेक द ट्रांजिशन. अब यहां पर देखिए, अगर किसी ग्रुप में सिंगल एलिमेंट है तो यहां पर फर्दर कोई पार्टीशन होगा या नहीं होगा? भाई अगर आप ग्रुप में अकेला हो तो आपके अंदर कोई पार्टीशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि पार्टीशन का मतलब है कि आपको 20 से काट देना. ठीक है ना? तो यहां पर कोई पार्टीशन नहीं होगा. सी, इस ग्रुप में दोनों का ट्रांजिशन सेम है. 0 पे ई है, 1 पे डी है, तो यहां पर फर्दर कोई पार्टीशन नहीं होगा. यहां पर भी पार्टीशन सेम है. सो हियर वी आर रियलाइजिंग नो फर्दर partition. So number of groups is equal to number of states, or you can say the number of minimum states. Okay, the number of groups is equal to number of states. See, यहां पर क्या हो रहा है? This is the state Q0, this is the state Q1, and this is the state Q2, and this one is the state Q3. So एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो स्टेट B एंड C है वो आपस में मर्ज हो जा रहा है, और स्टेट E एंड F है ये भी आपस में क्या हो जा रहा है? मर्ज हो जा रहा है. सो मिनिमाइजेशन में एक्चुअली में क्या होता है, जो सिमिलर काइंड के स्टेट है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, which will result in reducing the number of states.
which will result in reducing the number of states. So ultimately, if you will try to draw a DFA from this particular transition, so let's see how to draw. Let's see how to draw a DFA. See, एक्चुअल मशीन में ए हमारा फाइनल इनिशियल स्टेट था, तो यहां पर भी ए हमारा इनिशियल स्टेट होगा. ठीक है, चलिए ए पे अगर जीरो इनपुट दे रहे हैं, वी आर माइग्रेटिंग टू बी. ए पे अगर हम लोग जीरो इनपुट दे रहे हैं, वी आर माइग्रेटिंग टू बी. और बी जिस ग्रुप में है उसमें एक्चुअल में दो स्टेट है, बी एंड सी. ए पे वन इनपुट दे रहे हैं, अगेन वी आर माइग्रेटिंग टू बी. सो 0 1 पे इसी जगह ट्रांजिशन होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीसी, द ग्रुप बीसी. तो बीसी में अगर जीरो इनपुट दे रहे हैं, वी आर माइग्रेटिंग टू ई. इफ यू आर सप्लाइंग जीरो, यू आर माइग्रेटिंग टू ई. और ई जिस ग्रुप में है वहां पर दो एलिमेंट है, ई एंड एफ. और अगर बी में वन इनपुट दे रहे हैं, यू आर माइग्रेटिंग टू डी. इफ यू आर गिविंग ए इनपुट सिंबल 1, यू आर माइग्रेटिंग टू डी. ओके, नाउ यू हैव अ टू डिफरेंट स्टेट, डी एंड दिस. डी पे आप 0 1 कुछ भी दो, यू आर माइग्रेटिंग टू डी. ये देख करके लग रहा है कि डेड स्टेट है. ठीक है ना. नाउ ईएफ में 0 1 कुछ भी दो, आप सेम स्टेट पे माइग्रेट कर रहे हो. 0 1 पे यू आर माइग्रेटिंग ऑन द सेम state. Now E and F is the final state in the actual DFA, so we will make all the state as a final where E or F will appear. तो दोनों एक ही साथ appear हो रहा है, तो इसको हमने final state बना दिया. So what actually we are observing, minimization of DFA results in combining similar kind of states, similar kinds of states. And actually it is reducing the number of states. But here what is the most important thing, the language generated by machine M, ये हमेशा सेम होता है. the language generated by machine M mini. Are you getting my point or not? Minimization will never change the languages, always remember. This is the first point. The second point is minimization will never change it will only reduce the number of states. Got it everyone? समझ में आया? तो चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई एम गिविंग यू अ न्यूमेरिकल, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. सो जस्ट सी ओवर हियर. My dear friends, if you are really liking this video, then use the code IFA to get minimum 10% discount. All of you. So see, this is the question of IT 2008, 2 marks. So what is the question is given? Consider the following two finite automata, M1 accepts the language L1 and M2 accept the language L2. Which one of the following is true? तो ये एक M1 मशीन है, दूसरा ये M2 मशीन है. यहां से लैंग्वेज L1 एक्सेप्ट हो रहा है और यहां से लैंग्वेज L2 एक्सेप्ट हो रहा है. तो L1 L2 में क्या रिलेशन होगा? That's what they are trying to ask. So just see over here. इस मशीन को देखो तो ये मशीन देख करके लग रहा है क्या है? NFA है. And if you will observe this machine is basically a DFA. तो दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग चेक कर लो, या तो आप एक प्रॉपर मेथड फॉलो करो. बिकॉज वेन एवर यू आर चेकिंग द इक्विवेलेंसी ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय टू डिफरेंट मशीन, then there is a possibility you would miss some of the string and which will result in a wrong answer, जो कि आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा और गलत आंसर आपको दे देगा. तो लेट्स सी,
अब ये NFA है, we know how to convert the NFA into a DFA. So what we need to do, we need to convert the NFA into a DFA, and then we need to minimize the DFA. Minimized DFA. And if this is equivalent to M1, then we will say both are equivalent, otherwise we will say both are equivalent, otherwise not. So let's see क्या दिया हुआ है NFA में, क्या दिया हुआ है. सपोज दिस इज द स्टेट A, this one is the 0 1, again this one is the 1, this is the state B, again this is the 1, this is the state C, which is nothing but a final state, this is the 0. देख करके लग रहा है यहाँ पर ये क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 1 1 एज अ सब स्ट्रिंग, set of all strings containing 1 1 as a substrings. This is the language accepted by this particular NFA. So just try to think about this. See, अब इस NFA को मैं DFA में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझना बात को. A and अगर A पे 0 लेते हैं, we are migrating to A. A पे अगर हम लोग 1 लेते हैं, we are migrating to A as well as B. A as well as B. Now A पे अगर 0 ले रहे हैं तो वी आर माइग्रेटिंग टू A ओनली, B पे 0 लेंगे तो देयर इज नो ट्रांजिशन. सो अल्टीमेटली ऑन द 0 इनपुट यू आर माइग्रेटिंग टू A. A पे अगर 1 ले रहे हैं, वी कैन माइग्रेट टू A एज वेल एज B. B पे 1 लेंगे तो वी कैन माइग्रेट टू C. सो अल्टीमेटली टेकिंग इनपुट सिंबल 1 on this state, we can migrate to A, B and C. Similarly, इस स्टेट पे देखते हैं, A पे अगर 0 लेते हैं, वी कैन माइग्रेट टू A. B पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, C पे 0 लेंगे तो वी कैन माइग्रेट टू C. सो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो वी कैन माइग्रेट टू A, C. A पे 1 लेंगे तो वी कैन माइग्रेट टू A एज वेल एज B. B पे 1 लेंगे C पे 1 लेंगे C. सो अल्टीमेटली देयर इज अ सेल्फ लूप ओवर द इनपुट सिंबल 1. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस. A पे 0 लेंगे, वी कैन माइग्रेट टू A. C पे 0 लेंगे, वी कैन माइग्रेट टू C. So on the 0 input, we can migrate to AC. A पे अगर 1 लेते हैं, we can migrate to A as well as B. C पे 1 लेंगे तो C. तो ultimately we are migrating to this state over the input symbol 1. Now, since C is the final state in NFA, so we will make all the state as a final where C will appear. So this one will become the final state. Now, this is the corresponding DFA. Let's minimize it. Let's minimized. Okay, just see over here. Take into the next slide, then we will try to find it. Okay, see. तो चलिए अब इसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करने का बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, मैंने आपको बताया था. ग्रुप ऑफ फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स को क्रिएट करना. तो ग्रुप ऑफ फाइनल एंड नॉन फाइनल. सो दिस इज द इनपुट सिंबल 0 and 1. सपोज नाउ अब नेम चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है ना. सपोज दिस वन वी आर इंडिकेटिंग Q0, Q1, Q2 एंड Q3, क्योंकि नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना. तो सेट ऑफ नॉन फाइनल में क्या आएगा, Q0 एंड Q1. सेट ऑफ फाइनल में क्या आएगा, Q2 एंड Q3. ओके, नाउ टेक द ट्रांजिशन. दिस इज द लीडर एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द लीडर एलिमेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप. अगर Q0 स्टेट में 0 इनपुट ले रहे हैं, वी आर माइग्रेटिंग टू द Q0 मीन्स इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Q0. 1 लेते हैं तो वी आर माइग्रेटिंग टू Q1. So it will become the again Q0 because the leader element of the Q1 is Q0. Similarly, Q1 पे 0 ले रहे हैं, we are migrating to Q0 which is the leader. अगर इस पे 1 ले रहा है, we are migrating to the Q2 and the leader element of the Q2 is Q2. Again Q2 पे 0 ले रहे हैं, we are migrating to Q3. Q3 का leader कौन है, Q2 है. इस पे अगर 1 ले रहा है, we are migrating to Q2 and leader element of Q2 is Q2. इस पे अगर 0 ले रहे हैं, we are migrating to Q3 and the leader element of Q3 is Q2. 1 ले रहे हैं, we are migrating to Q2 and this is the Q2.
since there are different transition, यहां पर देखिए अलग अलग ट्रांजिशन है, so here partition will occur, here partition will occur. So what will happen, this is the 0 1 और अब क्या होगा, यहाँ पर Q0 आएगा, here it will be a Q1 and here it will be a Q2 and Q3. So just see over here. अब इसका लीडर ये है, इसका लीडर ये है और इसका लीडर ये है. Q0 में अगर 0 देते हैं we can migrate to Q0, 1 लेते हैं तो we can migrate to Q1. So Q1 is the leader. Q1 में 1 लेते हैं we are migrating to Q2 and अगर 0 लेते हैं we are migrating to Q0. Q2 में अगर 0 लो या 1 लो, आप इसी स्टेट में माइग्रेट कर रहे हो, तो it will represented by Q2 and again Q2, means no further partition, no further partition. Got it? So ultimately what is happening, we are merging the state Q2 and Q3. So how the machine will look like, just see over here. This is the Q0 state. Q0 में अगर 0 इनपुट दे रहे हैं we are migrating to Q0, 1 इनपुट दे रहे हैं we are migrating to Q1. ठीक है, Q1 में अगर हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं we are migrating to Q2, on 0 इनपुट we are migrating to Q2 और Q2 जो स्टेट है वहां पर Q2 एंड Q3 है. ठीक है ना, हाँ सॉरी, हाँ Q1 में अगर हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं, 0 इनपुट दे रहे हैं Q1 में अगर हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं we are migrating, sorry here there is a mistake, dear students please try to understand. Q1 में अगर 0 इनपुट दे रहे हैं we are migrating to Q0 और 1 इनपुट पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 जा रहे हैं. This is the transition to the Q0 and this is the transition to the Q2. 1 इनपुट पे Q2 पे जा रहे हैं. तो यहाँ पर अगर 1 इनपुट दे रहे हैं, if you are supplying the 1 then you are migrating to the Q2, if you are supplying the 0 then you are migrating to the Q0. Okay, now in this state either you are giving a 0 or 1, you are migrating to the Q2 and Q2, you are migrating to the Q2 and 0 and now since Q2 and Q3 is the final state, so we will make this state as a final. So I am just bringing the same machine in the previous slide. So just compare this machine, just compare this machine with the machine given in this option. See 0 पे यहाँ पर है, 1 पे यहाँ पर है, 1 पे यहाँ से यहाँ जा रहा है, 0 पे यहाँ जा रहा है और 0 1 पे यहाँ सेल्फ लूप है. Both are the same machine, both are the same machine. Yes or no, all of you? So ultimately the language accepted by this machine will remains equivalent to the language accepted by this machine. Clear everyone? So इस तरह के बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स आते हैं, बस आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा and then you have to put your answer. Got it? So dear students, if you are liking this video, you can put your valuable comments. And tomorrow we will deal with the new topic, that is the product automated. If you are liking this video, you can use the code IFA to get the subscription and subscribe this channel. Press the bell icon button to get all the notification and put your valuable comments so that all the student will get the inspiration. Thank you very much. Good night. Take care. मस्त रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे. Bye.